we will discuss the order of convergence of a method. Actually, all the method are iterative. The method which we study here, all the method are iterative in nature, and each method provide the approximate value of the root, not exact value. So each method contains some error. The root obtained by any one method contain some error and is exact up to some digit only, some significant digit only. So we need to study the order of convergence of a method. So if suppose EI order of convergence of iterative method. So all the method are iterative. So what is order of convergence? Is the rate with which the error between the calculated value and true value decreases, and is the rate at which the error between true value and calculated value, that is approximate value, decreases, is known as order of the convergence. So to define the order of convergence, the order of convergence is defined in terms of error. So let EI and EI plus 1 are the error in ith and I plus 1th iteration. And suppose we want to find the root of equation fx is equal to 0. हेलो सर, आप अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दीजिए. अरे हमारा फुल स्क्रीन है भाई. सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है. इससे बड़ा कहाँ होगा यार. तुम अपनी साइड से कर लोगे, वहां से सही हो जाएगा. हाँ क्या चीज? अपनी साइड से कर लेगा ये जूम. हाँ तो कर ले, क्योंकि हमारा तो फूल तो यहाँ दिख रहा है, तो इससे ज्यादा तो कहाँ से होगा, या नीचे से हो सकता है. ओके सर, हो गया सर, हो गया सर. Let EI and EI plus 1 are the error in ith and I plus 1th iteration. And suppose we want to find the root by any method, and then error at ith iteration is EI, and error at EI plus 1th, I plus 1th iteration is EI plus 1. So then we define the order of convergence in terms of EI and EI plus 1. In successive approximation,
So the iterative method is set to be kth order convergence, kth order convergent if k is the largest positive real number such that limit I tends to infinite and infinitely many times number of iteration. So ei plus 1 divided by ei to power k is less or equal to a. And if k is the largest positive real number such that in the limiting case when number of iteration tends to infinity, so the ratio of ei plus 1 to ei to power k is less or equal to a, where a is a constant. This is known as a is constant and called the asymptotic error constant. An a is constant and this a is known as asymptotic error constant. So if this is true and k is largest positive real number, then the particular method is called kth order. Any order of convergence of that particular method is called k. And here a depends upon the derivative. What is a? A is a constant called the asymptotic error constant. This depends upon derivative of the function at x is equal to approximate value of the root. And it depends on the derivative of fx at x is equal to approximate root. This. So here in this way we define what is order of convergence. The order of convergence of a method is the rate at which the error between ith and I plus 1th iteration decreases, and in two consecutive steps the rate at which the error decreases is known as order of convergence, and it is defined in terms of error.
So here we assume EI the error in ith iteration and EI plus 1 be the error in I plus 1th iteration. And we assume that there exists a largest real positive real number for which limit I tends to infinite EI plus 1 upon EI to power k is always less or equal to A, where A is the constant known as asymptotic constant and its value depend on the derivative of the function at the approximate value of the root. So this is general definition, order of convergence, and with the help of this formula, we can determine the order of convergence of the particular method. So now we will discuss the order of convergence of bisection method. Now, order of convergence of bisection method. So we know that in bisection method, we consider root is the middle point of the interval. Root is the middle point of the interval. So if we suppose middle point is the, suppose this is the interval, and here we assume that this is the middle point and this is the root of the given equation f(x) is equal to 0. So in this way, in successive approximation, the maximum error will be half of the length of the current interval. मान लीजिए कि after one step we obtain this interval, then again the root is this, the maximum error will be half of the length of this interval, and that is if EI is the error in the ith iteration, and EI be the error in the ith iteration, and EI plus 1 be the error in I plus 1th iteration, then maximum error from EI to EI plus 1 क्या हो जाएगा 1/2. तो EI is equal to EI plus 1 होगा. जैसे EI के लिए जो सपोज करिए ये इंटरवल आया, तो नेक्स्ट इंटरवल में मैक्सिमम एरर विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, क्योंकि जो मैक्सिमम एरर है मान लीजिए ith इटरेशन पे ये EI ले लिया, तो EI मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ ऑफ द इंटरवल. देन फॉर नेक्स्ट इटरेशन मैक्सिमम एरर विल बी हाफ ऑफ दिस एरर, क्योंकि यहाँ पर जो एरर है क्या, मान लीजिए एक स्टेप हमने लिया, एक स्टेप लिया मिडिल पॉइंट, तो मैक्सिमम एरर ये है, तो दिस इज EI मैक्सिमम. तो देन फॉर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देन मैक्सिमम एरर विल बी दिस इज द मैक्सिमम एरर EI plus 1. तो EI plus 1 क्या है, दिस EI, ये भी EI है, ये भी EI है और ये भी EI है, हाफ ऑफ द इंटरवल. मैक्सिमम मिनिमम 0 होगा,
So then EI plus 1 will be 1 by 2 of EI maximum. So we obtain the relation 0.5 EI. So this implies EI plus 1 upon EI limit I tends to infinity. ये always क्या आएगा? This will be 1 by 2. Maximum value will be less or equal to 1 by 2. So here this is maximum less or equal to 1 by 2. तो here A is equal to 0.5 and K की वैल्यू क्या है? K is 1. तो here the order of convergence of bisection method is 1 and linear convergence, and that is maximum one digit match from one step to another step. And if suppose in ith iteration we enjoy the root match up to n significant digit, then for I plus 1th iteration maximum it match up to n plus 1 digit significant digit. ऐसा भी हो सकता है कि n ही हो, but maximum n plus 1. And from one iteration to other iteration maximum one digit match, maybe less than 1. So this is the order of convergence. The order of convergence of bisection method is 1, linear convergence, and asymptotic constant is 0.5. Next, order of convergence of regular falsi method or false position method. अब इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? मतलब ये आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, दिस EI plus 1 upon EI to power K, this is less or equal to A. This relation इससे कंपेयर कर. The general formula for false position method to find the root of fx is equal to 0 is xi plus 1 is equal to, जो डिराइव किया गया है पहले, xi minus 1 afxi minus xi afxi minus 1 upon afxi minus afxi minus 1. This is the general formula to find the root of equation fx equal to 0 by using false position or regular falsi method, where axi plus 1 axi and xi minus 1 क्या है? These are I plus 1th these are I plus 1th ith and I minus 1th approximation to the root, approximation to the root. मतलब in this formula xi plus 1 is I plus 1th approximation and xi is ith and xi minus 1 is I minus 1th approximation to the root of
fx is equal to 0. This formula, suppose this is 1, this 1 can be written as 1 can be written as xi plus 1 is equal to xi minus xi minus xi minus 1 into f xi divided by f xi minus f xi minus 1. उसी फार्मूले को आफ्टर सम अरेंजमेंट वी कैन राइट this. Suppose this is 2, let alpha be the true root of fx is equal to 0. Then क्या होगा? f alpha will be 0. Alpha be the true root of the given equation. Then f alpha is 0. If ei plus 1, ei and ei minus 1 are the error for I plus 1th, ith and I minus 1th approximation to the root of fx is equal to 0. Well, these are the error in respectively. So according to the assumption, you consider ei minus 1 error. Error is the difference between true value and calculated value. The true value is alpha. दोनों चीज कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस होगा, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं दैट इज एक्स, अपने सुविधा के लिए एक्स आई माइनस 1 माइनस अल्फा. दिस में बी टेकन एज अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1. So this implies xi minus 1 is equal to alpha plus ei minus 1. Yeah, this is taken for simplicity. Otherwise, we can also take this to alpha minus xi minus 1. Similarly, ei plus 1 is equal to xi plus 1 minus alpha. So this implies xi plus 1 is equal to alpha plus ei plus 1. And ei is equal to xi minus alpha. So this implies xi is equal to alpha plus ei. Now substituting these value into, suppose this is 3. So substituting these value into, so we have xi plus 1 alpha
plus EI plus 1 is equal to XI alpha plus EI this minus यहाँ क्या आएगा XI तो XI minus XI is alpha plus EI minus XI minus 1 तो alpha minus EI minus 1 this alpha will be cancelled out into FXI XI is alpha plus EI divided by FXI F alpha plus EI minus F alpha plus EI minus 1 this relation, and here this alpha also cancel out. Now this can be written as EI plus 1 is equal to EI minus EI minus 1 EI minus EI minus 1 into F alpha plus EI divided by F alpha plus EI F alpha plus EI minus F alpha plus EI minus 1. Now this can be written as using Taylor series expansion for this function. Actually EI and EI minus 1 these are small quantity. So expanding this function in power of EI, so it become F alpha plus EI F dash alpha plus EI square by 2 F double dash alpha and so on this divided by यहाँ भी लिखेंगे तो F alpha plus EI F dash alpha plus EI square by 2 F double dash alpha and so on, and then minus F alpha plus EI minus 1 F dash alpha plus EI minus 1 square by 2 F double dash alpha and so on this. You see कि alpha is exact root, so since F alpha is 0, so using this become 0, this become 0 and this become 0. Now this can be written as EI minus EI minus 1 into here EI can be taken outside, so EI and F dash alpha plus EI by 2 F double dash alpha and so on this upon, you see here this term and this term, so it become EI minus 1 common F dash alpha, and second term you see it become plus EI square minus EI minus 1 square by 2 F double dash alpha and so on this. Now this can be written as EI. You see here EI minus 1 is common. Here in every term contain EI minus 1. अगला क्या आएगा? क्यूब आएगा.
तो क्यूब में भी एक टर्म होगा, 4 आएगा, 4 में से एवरी टर्म कंटेन EI माइनस EI माइनस 1, तो टेकिंग कॉमन, तो देन इट विल बी कैंसिल आउट, तो EI माइनस EI माइनस 1, EI and F dash alpha also taking common, so it become 1 plus EI F double dash alpha upon 2 F dash alpha and plus and so on, divided by here EI minus 1 common, this cancel out, and then F dash alpha also common, so 1 plus EI plus EI minus 1 by 2 F double dash alpha upon F dash alpha and so on, this also cancel out, so finally it become EI minus EI 1 plus EI F double dash alpha upon 2 F dash alpha and so on into 1 plus EI plus EI minus 1 by 2 F double dash alpha upon F dash alpha to power minus 1, यहाँ भी डॉट डॉट होगा, this actually EI and EI minus 1, EI plus 1 all are small quantity, so neglecting higher order term than 2, neglecting higher order term than 2, so it become you see this become EI minus EI into, अब हायर ऑर्डर टर्म देन 2 अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक तो यही आ जाएगा, इसका ये टर्म आ जाएगा, इसके बाद दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, ये टर्म इसके साथ आएगा, तो यह लिख लेते हैं कि 1 प्लस EI F डबल डैश अल्फा अपॉन 2 F डैश अल्फा, एक तो ये आगे अगला जो आएगा स्क्वायर आएगा, तो वो हमें नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, तो देन अब यहाँ छोड़ दे रहे हैं, देन हियर प्रोडक्ट विथ EI, तो EI बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, फाइनली ये साइन हटा देते हैं और ये माइनस लिख देते हैं, माइनस ऑफ दिस, ये हो जाएगा दिस, ये हटा दिए, तो देन 1 माइनस, तो 1 हो गया ये, एंड माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो EI माइनस EI बाई 2 F डबल डैश अल्फा अपान F डैश अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा टर्म आएगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो EI सॉरी 1 के साथ ये हो गया, फिर इसके साथ और EI माइनस 1, तो माइनस EI माइनस 1 बाई 2 F डबल डैश अल्फा अपान F डैश अल्फा, और जितने भी आएंगे प्लस टर्म ऑफ ऑर्डर EI स्क्वायर, तो फाइनली दिस इज इक्वल टू, ये EI इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो EI माइनस EI एंड प्लस EI माइनस 1 इंटू F डबल डैश अल्फा अपॉन 2 F डैश अल्फा प्लस ऑर्डर ऑफ EI स्क्वायर, EI स्क्वायर मीन्स द टर्म कंटेनिंग EI स्क्वायर एंड हायर पावर इन EI,
तो this again, this cancel out, this cancel out. So finally we obtain EI plus 1 is equal to EI plus 1 is equal to EI minus 1 F double dash alpha upon 2 F dash alpha plus term containing EI square. As EI and EI minus 1 are very small, so neglecting this term, neglecting this. Neglecting the term containing EI square and higher power in EI. As EI minus 1 are small, क्योंकि EI plus 1 इसमें नहीं आएगा इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं. So then we have finally this relation, this relation. Now we know that for the order of convergence, EI plus 1 is equal to EI k into A. तो फ्रॉम दिस रिलेशन, अब जो भी नंबर अगर इसका डालना है, कहीं 2 के बाद हमने नंबर नहीं डाला है, तो सीधे अब इसको 3 कर दीजिए. दिस 3 4. तो फ्रॉम 4 EI is equal to EI minus 1 to power KA. Suppose this is 5. So from this relation, here we obtained EI so this implies EI minus 1 to power K is equal to EI upon A, or EI minus 1 is equal to EI upon A to power 1 by K. यहाँ K is not 0. So then substituting the value of EI plus 1, EI minus 1 in 3. So from 3, 4 and 6. So we have EI plus 1 is EI to power KA is equal to EI is EI into EI minus 1. So EI upon A to power 1 by K. So this implies EI K is equal to EI to power 1 plus 1 by K and into A to power इधर लाएंगे तो -1 and minus 1 by K. This. The comparing the power of EI on both sides. So this implies K is equal to 1 plus 1 by K. और इसको जो है यहाँ पर जो रिलेशन लिया है, सपोज करिए इसकी कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए m है, तो यहाँ लिखना होगा into m, this into m. तो देन
equating the power of EI on both sides, we obtain this relation. This is quadratic in k square minus k minus 1 is equal to 0. So by solving this, so we obtain the value of k as 1.618. So this is the order of convergence of Sir, you are muted. तो देन कंपेयर जो है कि हियर ए इज इन दिस क्वेश्चन ए इज दिस वैल्यू एक्चुअली ए इज दिस m into a. So thus we obtain order of convergence of regular Palsy method is 1.618. In the similar way, we can determine the order of convergence of Newton-Raphson method और वो 2 आएगा. उसको भी क्या करेंगे, हम हिंट दे दे रहे हैं, आप करिएगा. जैसे फार्मूला क्या है, xi + 1 इज इक्वल टू xi माइनस f(xi) upon f'(xi). तो सेम आप एरर ले लीजिए ei एंड ei + 1 और दोनों की वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू की अल्फा इज द रूट, तो एफ अल्फा विल बी 0 और xi is the approximation, then ei and here xi + 1 is the approximation. तो then एरर क्या होगा, ei is equal to अल्फा माइनस xi एंड ei + 1 is equal to अल्फा माइनस xi + 1. तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके जैसे वहाँ पे हमने एक्सपेंशन किया टेलर एक्सपेंशन, सेम इसी वे में करेंगे. एंड कंसीडरिंग द टर्म अप टू, यहाँ पर हमने सेकेंड डिग्री को ही निग्लेक्ट कर दिया है, लेकिन अगले वाले केस में आपको सेकेंड डिग्री लेना होगा. ऑर्डर ऑफ EIQ 3 तक निग्लेक्ट करेंगे, तो ये निग्लेक्ट करेंगे तो ये जो रिलेशन आएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, ei + 1 अपॉन ei स्क्वायर, दिस इज लेसर इक्वल टू ये आएगा. तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये खुद कर लीजिएगा. मतलब सेम प्रोसीजर है, यहाँ से xi + 1 रखिए और यहाँ पर टर्म कंसीडर द टर्म अप टू ei स्क्वायर, यहाँ क्यूब से निग्लेक्ट करेंगे. ठीक है, हेलो. यस सर. तो ये आप जो है आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा. ठीक है, तो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है. अब नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फाइनाइट डिफरेंसेस. ठीक है.